Hello, this side is Anwar Hussain, and I'm going to deliver a lecture on the topic inverse of a function. Okay, the topic name is inverse of a function. Inverse of a function. तो एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स निकालने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो फंक्शन है, क्या वो फंक्शन उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका तो इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है, और उस तरह के फंक्शन को बोलेंगे हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक दैट व्हेदर द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट। ओके, और तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, और उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग दो पैरामीटर चेक करेंगे। एक चेक करेंगे कि द फंक्शन इज द फंक्शन एक वन ऑन फंक्शन। अगर वो फंक्शन वन ऑन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है, देन देन वो फंक्शन क्या होगा, एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगर एक फंक्शन वन ऑन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन है, देन उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। उसका मतलब क्या, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ओके, टू फाइंड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ a function, the function should be one on and on to। अगर एक फंक्शन वन ऑन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन है, then उस फंक्शन को बोलेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो पहले तो दो पॉइंट के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि है क्या, एक वन ऑन फंक्शन है क्या और ऑन टू फंक्शन है क्या, और कैसे चेक करेंगे कि एक फंक्शन वन ऑन फंक्शन और वन टू फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। सो वन ऑन फंक्शन, ओके, तो वन ऑन फंक्शन क्या होता है। वन ऑन फंक्शन हम लोग उसी को बोलेंगे अगर मान लीजिए एक फंक्शन है, मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी, और इस फंक्शन में हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस होगा बी में। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को बोलेंगे वन फंक्शन। If each and every element of A is having different images in B, then that type of function is called one-on function. Okay, the definition is that different sorry different element of A having different images in B, different images in B। ओके, तो इसको हम लोग एक मैपिंग की हेल्प से समझ लेते हैं कि हाँ क्या होता है एक वन ऑन फंक्शन। ओके, तो मान लीजिए एक फंक्शन है ए टू बी, एक फंक्शन है ए टू बी, एक फंक्शन है। ओके, और मान लीजिए कि एक ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में वन टू थ्री। ठीक है, और मान देखिए कि ए का इमेज है वन, बी का इमेज वन और सी का इमेज है टू। तो क्या ये फंक्शन एक वन ऑन फंक्शन है? नहीं है, नॉट ए वन ऑन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए में दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों का इमेज वन है और दोनों का सेम इमेज है। इसका मतलब इस फंक्शन वन ऑन फंक्शन नहीं है। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि और एक फंक्शन है एफ ए टू बी, और ए का एलिमेंट है ए बी सी और बी में वन टू थ्री, और ए का इमेज मान लेते हैं कि वन, बी का इमेज टू, सी का इमेज थ्री। तो क्या फंक्शन एक वन ऑन फंक्शन है? यस, दिस फंक्शन इज ए वन ऑन फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे कि एक वन ऑन फंक्शन बोलेंगे इसको। ओके, तो इसको
इसको आप लोग ग्राफिकल अप्रोच से भी चेक कर सकते हो कि एक फंक्शन वन ऑन फंक्शन है कि नहीं। तो ओके, देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच। तो मान लीजिए कि आपके पास फंक्शन है एफ एक्स। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, उसका उस फंक्शन का आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो मान लो कि एक फंक्शन एक एफ एक्स फंक्शन है और ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज लाइक दैट। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे कि एक कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ने कर्व को एक ही बार काट करे और इंटरसेक्ट करे, उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब कि द फंक्शन इज वन ऑन फंक्शन, वन ऑन फंक्शन। ओके, तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा है, मान लीजिए कि फंक्शन ऐसा है। तो क्या क्या ए वन ऑन फंक्शन है, उसको कैसे चेक करेंगे? कोई भी रैंडम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए और चेक करें कि इस लाइन ने कर्व को कितना पॉइंट पे कट किया। 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन ऑन फंक्शन नहीं है, नॉट वन ऑन फंक्शन। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो इसमें और एक अप्रोच है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो, बाय डिफरेंशिएशन। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन आता है तो यू कैन चेक इट बाय डिफरेंशिएशन। तो let's say the given function is y equal to fx. So then find f dash x, and if f dash x is greater than 0 or if f dash x is less than 0, that means f dash x greater than 0 means that function is strictly increasing, and if f dash x less than 0 matlab function is strictly decreasing function. In both the case the function is one on function, so first you do differentiation, and if the differentiation of the function is always greater than 0 or always less than 0 in their domain, then this function is called one on function. Otherwise the function will not be a one on function, then it will be called a many one function. Okay, so next topic means next जो parameters था वो देख लेते हैं, that is one to function. Second one is one to function. हम लोग कैसे चेक करेंगे एक फंक्शन वन टू फंक्शन है कि नहीं? ठीक है, तो if range of the function, if range of the function and range and codomain of the function and codomain of the function is equal, then it is called a onto function. अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाए देन उस फंक्शन को बोलेंगे onto फंक्शन। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी एक मैपिंग के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए एक फंक्शन है, मान लीजिए कि एक फंक्शन है f a to b, एक फंक्शन है और एक एलिमेंट है a b c, c का एलिमेंट 1 2 3, और लेट्स से द इमेज ऑफ a is 1 and image of b is 2. This is the function. ठीक है, so is the function is onto function? No, this is not a onto function. क्यों? क्योंकि इसका मैं अभी डिटेल्स में नहीं बोलूंगा कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन। इस फंक्शन में डोमेन क्या है, सॉरी रेंज क्या है, रेंज इज 1 2, एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन इज 1 2 3. So that means range and codomain are not equal.
तो इसको हम लोग एक ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, let's say f is a function from 1 to b, a to b, and the element of a are a, b, c, element of b are 1, 2, 3, and images of a is 1, images of b is 2, image of c is 3. What is the domain here? What is the range here? Range is 1 to 3. And what is the codomain? Codomain is also 1 to 3. That means in this case, codomain and range are equal. That means this function is a one to function. Yes, this function is a one to function. क्या function one on function क्या इस function one on function है? Yes, this function is one on function also. क्योंकि different images of A having different different elements of A having different images in B. That means this function is a one on function as well as one to function. ठीक है? So अभी टॉपिक पे आते हैं कि मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बट हाउ विल यू फाइंड द इनवर्स फंक्शन? Let us assume that the function is invertible function, or we have found that the function is invertible function. That means the function is one and on two. Then how will you find the inverse of that function? Okay, let's discuss that. Okay, let me first define what is an inverse function. What is the definition of an inverse function? Inverse function. Okay, so let f is a function from a to b, bn 1 1 and onto function. Okay, then there exists a unique function. Then there exists a unique function there is a unique function. Let's say that is b to a. एक function है g that is b to a, such that f of x equal to y and g of y equal to x, and x belongs to a and y belongs to b. Then g is called the inverse of f. तो मान लीजिए कि f एक फंक्शन है a to b जिसका डोमेन है क्या a और कोडोमेन है b, और मान लेते हैं कि वो फंक्शन क्या है, वन ऑन फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है। देन एक ऐसा फंक्शन जी को हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलेंगे जिसका डोमेन होगा क्या b और कोडोमेन होगा a। इनवर्स एंड फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन एंड कोडोमेन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, मैपिंग के हेल्प से समझ लेते हैं कि क्या होता है कि एक इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना। तो लेट्स से फंक्शन f एक फंक्शन है a टू b और इसमें एलिमेंट है a b c 1 2 3 और a का इमेज है 1, b का इमेज है 2, c का इमेज है 3। देन जो f इनवर्स होगा और डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, g जो होगा, मान लीजिए फंक्शन है g दैट इज f इनवर्स, उसका डोमेन क्या होगा b और रेंज क्या होगा a, कोडोमेन क्या होगा a, 1 2 3 a b c। तो दिस विल बी द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। Okay, now let us understand how to solve, how to find that, how to find the inverse of that function. Okay. Okay. So see, solution process. First, step one. Better write it. Step one. Step one. Write y equal to, write f of x equal to y. Then step two.
find the value of or solve the equation for x in terms of y if possible, ब्रैकेट में लिख दो कि if possible. Okay, next step 3 is interchange x and y. Interchange x and y. You will get it how to do it if we do a problem, then it will be more clear to you. So these are the three steps. I have divided into 3 steps. The first step is that you will write fx equal to y, then you will solve x in terms of y, then you will just interchange x and y. Okay. Okay, let's take a problem. If we take a problem, it will be more clear to you. Let's take a problem. Let f is a function. Let f is a function r to r. Be defined by f of x equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2. Question is fx invertible? Is fx invertible? If so, find its inverse. Okay, the question is that fx is function is given, इसका डोमेन है क्या r और को डोमेन क्या है वो भी r, मतलब r मतलब रियल नंबर. तो फंक्शन क्या है fx इक्वल टू e to the power x plus, sorry it is not plus, actually it is minus e to the power x. Okay, so first we need to check that whether the function is invertible or not. And how to check that? We will check whether the function is one-on function and one-to function. If the function is one-one and onto both, then this function is invertible. Okay, so let's check it first for one-on function. और एक function one-on है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं? उसको differentiate करके. ठीक है? तो first differentiate it. What is f dash x? F dash x will be e to the power x minus e to the power minus x, because differentiation of e to the power x is e to the power x into minus 1, so it will be plus x by 2. So this is f dash x, and this is a positive term. This term cannot be negative, so this is always positive for all x belongs to r. For all x belongs to r, this expression is always positive, क्योंकि e to the power x is positive and e to the power minus x is also positive, क्योंकि exponential function कभी negative हो ही नहीं सकता. ठीक है? तो f dash x positive, that means the function is 1 1 and onto function. Okay, function क्या है? Sorry, my mistake. The function is 1 1 function. 1 2 need to check, cannot say like that, right? 1 1 function. Now let's check it for onto function. Okay, what is the range of this function? fx क्या है? fx is e to the power x minus e to the power minus x by 2. What is the range of the function? Range of the function is r. And what is codomain? Codomain is also r. So that means this is a onto function, क्योंकि range and codomain are equal. So the function is 1 1 and onto both. That means fx is a invertible function. Invertible function.
means fx is an invertible function. Okay. Now let's find its inverse. So how to find it? What were the steps? The first step is that fx equal to y. We will write down fx equal to y. What is fx? Fx is e to the power minus x, e to the power x minus e to the power minus x by 2 equal to y. Then let's simplify it. E to the power x minus e to the power x is equal to 2y. Then e to the power x square minus 2y e to the power x. I'm just doing simplification. Minus 1, okay, equal to 0. Now this is a quadratic equation, but not quadratic in x. This is quadratic in e to the power x. So we can find out the value of e to the power x. What was the formula? Minus b. And what is the b here? Minus 2y. So plus 2y. Plus minus b square. B square means 4y square minus 4 into 1 into minus 1 by 2 into 1. Then e to the power x will be y plus minus 1 plus y square, right? Now see here. Now let's say this is a. Let's say this is b. Now see, b is always greater than 1. B is always greater than 1. Okay. Now if we take the negative sign, so smaller number minus large number, that is negative. But left hand side, e to the power x can never be negative. So we will not consider the negative sign, right? We cannot consider the negative sign. So e to the power x will be y plus 1 plus y square. See, e to the power x can never be negative, so we cannot take the negative sign here. So we will we can only take the positive sign here. Okay. Now f of x equal to y that we have considered, then x equal to f inverse y. Sorry, x equal to f inverse of y. What we can write here? X equal to f inverse of y. Okay. So let's replace the x by f inverse of y into y plus 1 plus y square. Let's take LCM. Sorry, let's take log both side. Then it will be f inverse of y equal to y plus 1 plus y square. Just replace replace y with x by x actually. F inverse x equal to x plus 1 plus x square. So this is the final answer, that is f inverse x. This is our inverse function, inverse of the given function. Okay, I hope it is clear. So again we will take a simple problem on, on this topic. Okay, the question is let's say f of x equal to x minus 1 by x plus 2. Let's assume that this function is 1 1 as well as 1 2 function. Then find its f inverse, basically f inverse x. Okay, so we will not check whether the function is 1 1 and 1 2 because we're assuming that this function is 1 1 and 1 2. Okay, so the first step was fx equal to y. Okay, what was the fx? X minus 1 by x plus 2 equal to y. Sorry. So now let's solve x in terms of y. Okay, so x minus y equal to xy plus 2y, x 1 minus y equal to 1 plus 2y, x is equal to 1 plus 2y by 1 minus y. Okay,
Now from this we can write that x equal to x inverse of y, f inverse of y equal to 1 plus 2y by 1 minus y. Then just replace y by x, you will get the f inverse of x. So this is the so this is the inverse of the given function, right? So this is the inverse of the given function. So I hope this is clear. Now we are going to see some properties of inverse function. यार क्या करूंगा मैं ऐसा करके. Okay, properties of inverse function. Properties of inverse function. Properties of inverse function. Okay, पहला property कि function and its inverse functions interchange their domain and codomain. Function and its inverse function interchange their domain and codomain. Interchange their domain and codomain. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फंक्शन का डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन होता है, जो फंक्शन का कोडोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है. ठीक है. दूसरा प्रॉपर्टी fx and f inverse x, fx and f inverse x graph are symmetrical about y equal to x line. जो fx का ग्राफ है और जो f इनवर्स x का ग्राफ है, दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट y equal to x line. ग्राफ के हम समझ लेते हैं कि ऐसा होता है कि let's say this is the f no, y equal to x line. Let's say this is y equal to f of x line. This is, let's say, f of x graph. So this is y equal to x line. So this will be f inverse x. क्योंकि fx और f inverse x are symmetrical about y equal to x line. ठीक है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. fx equal to, मान लो fx equal to ln x. So f inverse x, इसका अगर इनवर्स निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि f inverse x आएगा e to the power x. ठीक है. Okay. Now let's draw fx ln x. This is the graph of ln x. Let's draw f inverse x. This is the graph of e to the power x. This is ln x. If you draw the y equal to x line, you will see that this ln x and exponential graph, logarithmic graph and exponential graph, they are symmetrical about y equal to x line. That's why ln x, logarithmic function, and exponential function are said to be inverse function, inverse to each other. So logarithmic function and exponential function, logarithmic function and exponential function are inverse to each other, see their graph are symmetrical about y equal to x line, right? I hope it is clear. Now third property क्या है कि जो y equal to f of x and y equal to f inverse x, इन दोनों का जो कर्व होगा, they will intersect at y equal to x line. Intersect at y equal to x line. Okay. Now okay, to solve, fourth property is to solve
fx equal to f inverse x, fx equal to f inverse x. If we have to solve equation like fx equal to f inverse x, right? We just solve. We have to solve fx equal to x. You will get the result. In a question, if you are asked to find the solution of fx equal to f inverse x, instead of solving this, you just solve this one, fx equal to x. You will get the result, same result, right? So fifth property, fifth property. Okay. So let's say that fx and gx, fx and gx are inverse to each other, inverse to each other. Then f of g of x equal to x. This is composite function f of g of x, right? And g of f of x is also equal to x. Proof. We can prove this. Okay. So it is saying that f and g are inverse to each other. ठीक है? तो मान लेते हैं कि gx equal to f inverse of x. Now just replace x by fx. So it will be g of f of x. I am replacing x with f of x. Then here in right side will be f inverse of f of x. So f inverse of f of x कितना है? X है. So g of f of x equal to x. So similarly, you can prove the other result also. Similarly, you can prove the other result also. So this is the result you need to remember, and this is the result you need to remember. And even you can find it easily if you know the property, right? Now we can derive one more important formula here. Okay. By now we know that ki fx equal to, let's take fx equal to y. So we can write x equal to f inverse of y, right? We can write this. So as we know that g is the inverse of x, so we can write x equal to g of y. So if we differentiate it dx by dy, you will get g dash y, right? Now if we directly differentiate it dy dx, you will get f dash x. Now if I write dy dx equal to 1 by dx dy, from this let me write here, from this dy dx means f dash x equal to 1 by dx dy. Dx dy means 1 by g dash y. So from here we can write g dash y equal to 1 by f dash x. This is also very important result. You can remember. Okay. So if you if you need g double dash y, you can also find it. Like just differentiate it again. G double dash y into dy dx. Now in right hand side, if you differentiate, this is u by v. So f dash x square. So they are minus 1 into f dash x. Sorry, minus 1 into f double dash x. Okay. So dy dx means f dash x. So here it will go there. So z dash y equal to
minus f double dash x by f dash x cube. So this is also you can remember as a result. It might help you in solving a problem from inverse function. So this is z double dash y. Okay. So the next property, I think property number 5. So next property is g of f inverse equal to, we can write f inverse or g inverse, right? Now in general what happens, g of f and f of g not equal. In general f of g not equal to g of f, but if f of g is equal to g of f, then f inverse x is equal to gx, we can say, or g inverse of x equal to fx. And in that case you can say that f of g of x equal to g of f of x equal to x. Okay, I hope this is clear. So that is all about inverse function. Thank you.